Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone, to the second day of 1 week research methodology workshop brought to you by Department of Sociology, Maulana Azad National Urdu University. मैं अदनान जमील, स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, आप तमाम हजरात का डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी की जानिब से मुंतखब करदा इस 5 रोज़ा रिसर्च मेथडोलॉजी वर्कशॉप में तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। गुज़िश्ता दिन हमने प्रोफेसर शर्मिस्ता भट्टाचार्य जी और प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद रज़ा ख़ान को सुना था। मैं गुजारिश करता हूँ अपने वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के एम ज़ियाउद्दीन साहब से कि वो हमें ब्रीफली कल का जो सेशन था उसे रिकॉल करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदनान। हाजरीन, और जिस तरह से आपने पिछले दिनों जिस तादाद में इस वर्कशॉप के बारे में अपनी इंटरेस्ट को जाहिर किया, ये बेहद खुशी की बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप में आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए। लॉजिस्टिक्स और दूसरे मसाइल की वजह से हमने कई लोगों की दरख्वास्त को शामिल नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे आप लोग माफ़ करें, क्योंकि मुसलसल कई स्टूडेंट्स और हमारे साथी फैकल्टी भी मुझे मैसेज और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट में ये बताना चाहूँ ताकि आने वाले स्पीकर्स के लेक्चर से कुछ कनेक्ट हो जाए कि कल के 2 सेशंस में हमने दरअसल प्रोफेसर शाहिद रज़ा ने राइटिंग डिसर्टेशंस के टाइटल के बुनियाद पर एक ब्रीफ डिस्कशन किया था, जिसके ज़रिए मास्टर्स के स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उन लोगों को डिसर्टेशन लिखनी है, पूरी फॉर्मेट बताई उन्होंने। दूसरा जो अहम हिस्सा था उस प्रोग्राम में शर्मिष्ठा भट्टाचार्य जी ने, जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के 2 अहम हिस्सों में एक हिस्से के बारे में काफ़ी बड़ा लंबा तवील डिस्कशन दिया, ख़ास तौर से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो नुआंसेस हैं, जो बेसिक मेथड्स है उसके बारे में एक्सपोजर दिया। इनफैक्ट क्वालिटेटिव मेथड्स कुछ ऐसे तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हैं जो सोशल साइंसेस के तमाम स्टूडेंट्स उसका इस्तेमाल अपने रिसर्च में नहीं करते हैं, लेकिन आपने कुछ न कुछ उस मेथोडोलॉजी के नुआंसेस के बारे में, उन तरीक़ेकार के बारे में सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि कल के बैकग्राउंड के बुनियाद पर जो सबसे अहम रिसर्च का हिस्सा होता है हाइपोथेसिस, और किसी भी रिसर्च के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होता है हाइपोथेसिस, जिसे आप मफरूज़ा कहते हैं, और उस रिसर्च में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी की क्या अहमियत है, कैसे समझनी चाहिए और किस तरह से उनकी बुनियादी इंट्रिकेसीज़ को अपने जहन में हमें रिसर्च में रखने चाहिए। ये आज के प्रेजेंटेशंस में, आज के डिस्कशन में आपको उसके बारे में काफ़ी तफसीली मालूमात हासिल होगी। मैं आप तमाम से फिर से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने तमाम सवालों को लिख कर रखें, ताकि सेशन के आखिर में उन सवालों को रिसोर्स पर्सन के सामने आप पोडियम में आके पेश कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया अदनान। Now we'll move on to today's session. Professor Sangamitra is going to talk about a very important topic today, that is hypothesis, reliability, and validity in social sciences and research. Before we go further, I would like to present a brief introduction of Sangamitra Acharya ji. Sangamitra Acharya is a professor at the Center of Social Medicine and Community Health, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University. She is currently at Ball State University, USA, as adjunct associate professor in the Department of Sociology. She was a UNFPA Fellow for Global Training Program on Population and Sustainable Development during 1995 to 96 at the University of Botswana. She was also awarded Asian Scholarship Foundation Fellowship during 2005. She was a visiting fellow at the University of the Philippines Population Institute and studied health issues among the Filipino youth. She was a research affiliate with Chinese Academy of Social Sciences. Her research interests include reproductive morbidity, gender, youth and discrimination, and social exclusion in health, and doing empirical and quantitative research. Professor Acharya has written several books
and has published more than 30 research papers and several project reports and monographs. May I now kindly request Professor Sangamitra Acharya to deliver her lecture today. Thank you. थैंक यू सो मच अदनान। आप सभी को मेरा आदाब, और मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी और अंग्रेज़ी में अपनी बात आपके सामने रखूँ। जैसा कि अदनान ने और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने बताया, हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, और आज के इस सेशन में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको मैं ये बात कम्युनिकेट कर सकूं कि जब हम कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, स्पेशली इन सोशल साइंसेस, हाउ डू वी गेट ऑन टू इवॉल्विंग द हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि कल के डिस्कशंस के दौरान आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का एक बहुत there's already an existing philosophy of research जिसके तहत हम अपनी सोच को बनाते हैं। कुछ theoretical positions होती हैं जिनको हम समझते हैं और कोशिश करते हैं कि जब हम रिसर्च करना चाहें तो कहीं ना कहीं जो existing theories हैं, जो existing evidences हैं, empirical facts हैं, उनके साथ जुड़कर हम अपने रिसर्च को बनाएं और आगे ले जाएं। तो जब हम इस फिलॉसफी रिसर्च की फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए अपना रिसर्च डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफरेंट अप्रोचेस की बात आ जाती है। और जैसा कि अभी मुझे समझ आया कि आप लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्च की कल बात की है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेरे ख्याल से दो बहुत अहम अप्रोचेस हैं सोशल साइंस में रिसर्च करने के लिए, जिसको करने के लिए हम अलग अलग तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये सब करने का बेसिक रीज़न शायद यही हो जाता है कि हम दरअसल करना क्या चाह रहे हैं। हमारे सामने शायद एक सवाल होता है, एक रिसर्च क्वेश्चन होता है जिसका एक आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही सिंपली अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो हाइपोथेसिस इज नथिंग एल्स but a tentative answer to this question that we are trying to evolve through research. जो हम research question develop करते हैं अपने research के लिए, hypothesis एक tentative answer होता है, क्योंकि हमने अगर अपना जो research का मुद्दा है वो तय कर लिया है तो कहीं ना कहीं जहन में एक problem है जो identify हो चुका है। हम शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, for example अगर हम current situation को ध्यान में रखें कि कोविड में इतनी सारी किस तरह से कोविड ऐसे फैल गया, मान लीजिए हम ये रिसर्च का मुद्दा लेके चलना चाहते हैं तो ये शायद एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है जिसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक सवाल अगर हमारे सामने है तो इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, वो एक जो सलीका है, एक डिज़ाइन जो हम तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें हाइपोथेसिस को समझने में, हाइपोथेसिस को डेवलप करने में बहुत मदद करती है। तो हम इस सवाल के जवाब के लिए हम हो सकता है कुछ लोगों के पास जाएं, उनसे कुछ सवाल पूछें, उनके सवालों को समझें। उस सवालों को समझने के लिए हम उन्हें कोलेट करेंगे, उन्हें किसी भी तरह से प्रोसेस करेंगे, फिर उस प्रोसेसिंग के बाद हमें कुछ नतीजे निकल के सामने आएंगे जिसकी बेसिस पे हम उस सवाल का, जो हमारे रिसर्च का सवाल है, उसका जवाब हम दे सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर doing is to pose certain questions for ourselves. आमतौर पे हम बहुत बड़ा सा टॉपिक लेके चलते हैं, जैसे कि जो हम सवाल मैंने जो अभी आपके सामने रखा कि कोविड का स्प्रेड इस तरह से कैसे हुआ, तो शायद मुद्दा हमारा बेसिक यही है कि कोविड के बारे में हम समझें। उससे थोड़ा सा और फोकस होते हुए हम ये समझने की कोशिश करने लगे कि स्प्रेड कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कौन से लोग अफेक्टेड हुए। तो एक जो ब्रॉड सा मुद्दा कोविड का है उसको हम किस तरह से और फोकस्ड नुआंस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड तो ठीक है, लेकिन विद इन कोविड व्हाट इज इट दैट वी आर इंटरेस्टेड टू
look at, understand, फिर शायद हम वैक्सीनेशन की भी बात करना चाहें, कौन से लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, क्यों नहीं लिया, हेसिटेंसी की बात कर सकते, कौन से लोग अफेक्टेड थे, हु वर द केयर गिवर्स, जो हम बहुत सारी बात फ्रंट लाइन वॉरियर्स की कर रहे थे। तो अलग अलग स्पेसिफिक हम सवाल उठा सकते हैं और हर स्पेसिफिक सवाल के बेसिस पे हमारा हाइपोथेसिस भी जनरेट होता है। तो वो ये चीज़ अगर हम बहुत अच्छे से समझ लें, तो दूसरी जो बात हमारे सवाल से जुड़ती है, हमारे रिसर्च क्वेश्चन से जुड़ जाती है, वो ये है कि शायद हम कुछ फिनोमेनाज में कोई रिलेशनशिप को समझने की बात कर रहे हैं। मसलन अगर कोविड आया फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे आया, क्या रीजंस थे, व्हाट वर द कॉजेस दैट कुड bring in COVID at a global level in such a short duration, and then what happened to it, what were the consequences of this spread that we all have experienced, as continuing to experience. तो कहीं ना कहीं एक हम फिनोमेनास को लेकर उनके एसोसिएशन की बात समझने की कोशिश करें, तो एक तरफ तो कोविड है जो विच डिसेंड्स अपॉन पॉपुलेशंस, दूसरी तरफ हुआ क्या जब कोविड आया। तो हम शायद दो तरह की बातों को कहीं ना कहीं जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि कोविड के दौरान क्या एजुकेशन में, हायर एजुकेशन को एग्जीक्यूट करने में, सीखने में और टीच करने में क्या कोई दिक्कतें आई। तो एक तरफ तो कोविड का सिनेरियो है, दूसरी तरफ ये जो लर्निंग प्रोसेस था, both in terms of imparting learning and in terms of learning per se, क्या इसमें कुछ रिलेशनशिप है। तो वी सी दैट कहीं ना कहीं हम प्रिडिक्टर्स की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, जो इस सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, जो वजह बन रहा है इस सिचुएशन को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस सूरत में कोविड हो जाता है और उसका प्रभाव हम कहाँ देख रहे हैं, एजुकेशन पे। फॉर एग्जांपल, उससे पहले हम स्प्रेड की बात कर रहे थे, तो स्प्रेड की किन लोगों पे उसका ज़्यादा असर हुआ। तो there is some kind of connotation that we are bringing in terms of the causal and cause-effect relationship, and that's where perhaps we start looking at what are the phenomena we are trying to understand, what are the variables, because variables are something which we use to understand the phenomena, और ज़्यादा focus हो जाता है within COVID, what about COVID is that which we want to understand. तो कहीं ना कहीं हम जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो उस सिचुएशन को लीड करते हैं, कॉज करते हैं, उनकी एसोसिएशन विद द आउटकम्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कोविड वर्सेस आउटकम ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल अटेनमेंट फॉर एग्जांपल, क्या रिलेशनशिप हम देख सकते हैं इसके बारे में। तो इसको लेकर हम परहैप्स बहुत सारे सवाल जनरेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन लिया, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस। तो ये एक सवाल हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आ सकता है और हम उस सवाल को कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस के फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन आई माइट बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए जब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो बहुत सीधे तरीके से ये हमारी समझ बन रही है कि हम एक एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं कोविड और कोविड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं और उसका नतीजा क्या हुआ एजुकेशन पे, particularly since you are all research scholars, maybe higher education पे क्या हुआ, क्या हम assignments कर पाए, क्या हम classes attend कर पाए, क्या connectivity की कोई दिक्कत हुई, submissions के problems हुए जब हम class attend कर रहे थे। तो I mean all of these that we've experienced can be the other side of the connect, the dependent variable, which is being caused because of the conditions which were generated because of COVID. तो हम एक independent और dependent variable या predictor and predicted variable, cause and effect variable का association हम कहीं ना कहीं इस जवाब में ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हम hypothesis
जनरेट करने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो एविडेंसेस हमारे पास हैं कोविड से जुड़े हुए, whatever facts and evidences that we can gather help us in raising these questions, not only raising these questions but also trying to give an answer to these questions. तो जब हम hypothesis को formulate कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सवाल हमारे जहन में आ रहा है उसका एक लॉजिकल आंसर हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोविड स्प्रेड हुआ, बहुत सारी मनगढ़ंत धारणाएं भी कोविड को लेकर बनी कि चाइना में कुछ हुआ और उन्होंने स्प्रेड कर दिया, बट कैन वी लॉजिकली गिव एन एसोसिएशन, गिव एन एक्सप्लेनेशन टू व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोविड। तो फिर वहाँ से जाके शायद हम ये समझना शुरू करते हैं कि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन विच कैन बी ऑफ दिस काइंड्स एंड देयरफॉर वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन दीज वेज। सो ये एक लॉजिकल एसोसिएशन हम ड्रॉ करते हैं उस फिनोमेना को समझने के लिए। तो इस समझ को बनाने के लिए जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है on one side about COVID, कैसे वो spread हुआ, on the other side, what were the problems which were being faced in transaction of education, both for you as students and perhaps on the other side of the tables, the problems with the teachers, the administration was experiencing. तो इनका जब हम एसोसिएशन लॉजिकली क्रिएट करते हैं तो शायद हम एक टेंटेटिव आंसर क्रिएट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इश्यूज देयर वर डिफिकल्टीज इन एग्जीक्यूटिंग द एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड पीरियड। So this is the tentative answer perhaps that we've given to this question, and then we design the research to test this hypothesis which we are forwarding, this explanation which we are giving for the question that we raised for this question in terms of the association. तो कहने का मतलब ये कि हाइपोथेसिस में न सिर्फ हम फैक्चुअल एविडेंसेस को समझते हैं, उनको लाते हैं, उन्हें देखते हैं, पर हम जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल अजम्पशंस हैं, उनको लेकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जो ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लिटरेचर एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, लिटरेचर इन्फॉर्म्स अस in order to pick up the research that we might be interested in doing. तो जो theoretical assumptions हैं already existing, उन्हें हम पढ़ते हैं, उन्हें हम relate करते हैं कि मान लीजिए spread of diseases से जुड़ी हुई बहुत सारी theoretical prepositions हैं, बहुत सारे frameworks हैं, तो उन्हें कोविड को समझने के लिए भी अगर हम इनका सहारा लेते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, इन्हें समझते हैं, तो कोविड से जुड़े हुए सवालों को भी समझने में, उनका आंसर देने में आसानी हो सकती है। तो एक चीज़ का ध्यान शायद यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, when we are creating this logical answer to the research question, the element of logic has to be extremely present. Why? Because बहुत सारे सवाल हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनका कि हम कोई लॉजिकल आंसर नहीं दे सकते। बहुत ही सिंपलिस्टिक सा सवाल मैं आपके सामने रख सकती हूँ। Say for example, is there God? Right? We may give an answer, yes, of course, because that's how I have experienced in my life. खुदा ने मेरे लिए ये किया, भगवान ने मेरे लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज दी, but we do not have a logical frame to be able to scientifically prove the presence of something whom we believe to be present in our personal lives, right? So not demeaning or disregarding the presence of what is whom we recognize as an omnipresent element in our lives. There is something which we ought to be experiencing vis-a-vis scientific research, wherein the explanations have to be supported by all kinds of evidences, right? So और ये करने के लिए हम बहुत सारे research methods को use कर सकते हैं, like I've said earlier, हम experiments design, quasi experimental design कर सकते हैं, stark जो conventional designs हैं आप लोगों ने शायद पढ़ी होंगी,
कहने का मतलब ये कि there can be different ways through which we can gather data, we can process data, analyze it through statistical, non-statistical techniques to be able to answer or explain the explanation that we could have given it. So very, very beginning starting point for a hypothesis is to ask a question. Then only we'll be able to formulate the answer to that question. So when we are writing the hypothesis, it begins with this question that we might be trying to ask. It gives us that focus, it gives us that specificity which can be researched, which can be taken on board for हमारे रिसर्च के लिए उसे हम आगे ले जा सकते हैं. Say for example, if I say, do students who attended more lectures online will get better grades, or will have better outcomes, learning outcomes, if I may say this. Now, this is a question where we can analyze in terms of collecting the data in terms of number of classes which were the classes which were taken, who were the ones taking the classes, what time of the period that the class was being taken, etc. So there is a logic in posing this question, and therefore trying to go to the literature. Has literature talked about anything of this sort? Has data, are there any empirical evidences? Ministry of Health and Family Welfare is giving us some data, certainly not as far my knowledge goes on educational attainment, but there are other crowdsourced data, other micro studies which have been informing us about it. So once we've created the question, once we are thorough with the question, with its specificities, the second level or the second step that we need to take is to look at the available literature which is there. So we are doing some kind of preliminary research by exposing ourselves to the literature existing in order to see the association between the phenomena that we are studying, what is it that already exists. So in doing so, we are also trying to understand what is already known to us. पहले से लिटरेचर ने क्या कहा हुआ है, किस तरह का हमें एम्पेरिकल एविडेंस पहले से मिला हुआ है, उसमें क्या हम कोई गैप्स ढूंढ सकते हैं, उसमें क्या हमें कोई गैप नजर आ रही है जिसको हम लेकर अपने थीसिस में, अपने रिसर्च में आगे ले सकते हैं. एंड वंस वी आर इन अ पोजीशन टू पॉइंट आउट दिस गैप, वी आर also in a position to conceptualize our research question. और conceptualize करने के लिए हम basically ये करते हैं कि जो हम phenomena की बात कर रहे थे कि we're seeing some kind of association between the phenomena, हम conceptualize करते वक्त ये कह सकते हैं, ये specifically बता सकते हैं कि जो phenomena हम study करना चाह रहे हैं, उन phenomena के तहत these are the trajectories within COVID. Perhaps I might want to see what has happened at the hospital level, what happened at the family level, community level, in terms of creating that environment which was conducive to learning. तो ये सारी जो trajectories निकल के आ रही हैं, ये हम conceptualize कर सकते हैं, और ये इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि literature ने हमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें तो हमने करी. We ensured that the frontline workers are protected in this way. We ensured that communities informed about it, but we weren't really very clear about what was happening in the education sector. We were not very sure what's happening to the workers which engaged with distress migration back to their original places. So the point is there are certain gaps which we can identify and take it forward for our research further. And the moment we are able to do this, we are in a position to identify or formulate the hypothesis for us. So going back to this very question, I would say maybe we can hypothesize it as, for example, attending more classes leads to better exam results or better learning outcome. So this is a tentative answer which we are proposing to that question, which we had posed in terms of whether attending classes will fetch good results or will not fetch good results. So I hope I'm making sense to you. And if there's any question, please do keep putting in your chat box, and we'll try to get there soon.
Okay, so once we have created this, we can refine our hypothesis, revisit the question and see if there is any need to, language is very important, academic writing is very important. So once the clarity is there in terms of the question we are posing, the clarity will automatically come in the answer that we are generating. So three basic things we need to keep in mind when we are formulating the hypothesis. One way to do it in a very simple form, which is like, you say, if ABC is happening, then this is what the outcome is expected. So it's labeled as if then form. What is happening? The same question we want to reframe or rephrase it in if then format. We'll say if a student starts attending more lectures, then the exam scores will be better. So if and then has been used in formulating your hypothesis. The second way, which I think a lot of us would be interested in using, is the correlational hypothesis, wherein perhaps the same question, same answer, same hypothesis can be rephrased as the number of lectures attended by students has a positive effect on the examination. So number of lectures attended and the positive outcome of the exam. This is kind of an association correlation that we are interested in looking at. The third way could be to draw some kind of comparability, some kind of comparison between, you can have groups of people, you could have a comparison over region, maybe rural and urban, people from different spaces. So we can probably phrase it as first-year students or students who attended more lectures will have better scores than those who will attend lesser classes. So there's a comparability which is being built up between those of us who've attended more classes versus those of us who've attended lesser classes. And we can kind of replicate it in terms of rural versus urban areas, boys versus girls, etc., etc., any kind of. The other thing which probably I would want to point out for us when we are doing hypothesis is, which I'm sure those of you who've tried to engage with statistical hypothesis are already familiar with. There's something which we are always told about the null hypothesis, right? Null hypothesis is something when we are involving a statistical testing of the hypothesis. Why null hypothesis? As as the name suggests, null hypothesis comes from the idea of, if you recall, it comes from the judicial sciences, meaning that in judicial sciences, we assume that the alleged person is not guilty till proven guilty, right? So you are taking the assumption that the students who are attending classes over the period of time, more classes, is not going to make any difference in terms of the learning outcome. Because, like I said, coming from the judicial sciences, you are not, you don't proclaim that the person who's been alleged is guilty, right? Till it is, you have to undergo through the tests, various kinds of procedures to be able to prove that the person is guilty. Similarly, when you're testing the hypothesis statistically, you begin with the null hypothesis. You see an association which is seemingly suggesting that in this there's no association between the two phenomena that you're trying to examine. And conversely, the alternative hypothesis says that there is a positive association in the two phenomena that you might be interested in studying. So when we are talking about the null hypothesis, and I'm sure you know that null hypothesis is represented as the hypothesis when we are testing in the statistical perspective, and prescript O is how you label null hypothesis, and H1 or HA is what the
alternative hypotheses. So the number of lectures attended by the students has no effect on their final exam result, is the null hypothesis. So we test this, and then by our statistical outcomes, we may be in a position to accept the hypothesis, yes, that there is no association, or reject it because there could be an association. Most of the time, when we are rejecting the null hypothesis, there is a probability of accepting the alternative hypothesis. But then there are different kinds of errors also which get factored in the statistical testing of the hypothesis. Some of you would be already familiar with, but for now I'm going to restrict myself only talking about the null and the alternative hypothesis. As long as we are in a position to understand the context of these two elements within hypothesis, I'll be happy to kind of get you there in that sense. Okay, so the other element that we can draw in terms of evolving the hypothesis is, like, you're making them very simple. There is like they're absolutely simple in terms of language, very, very clear in terms of the language. Say, for example, if I give you another example, smoking is a prominent cause of lung cancer. Very, very simple way to kind of raise a hypothesis and try to test that out. It's a very, it's a statement which is reflecting a very neat kind of association. Then there could be a complex association which we might be interested in looking at. So complex hypothesis could be where we might have multiple variables which become functional in terms of looking at the association across phenomena that we might be interested in examining. Individuals who kind of attend lesser classes will have higher propensities of getting poorer grades, and their opinions would be opinions about them could be more negative than positive. So you can keep making a complex kind of hypothesis, but it's always good to have simple hypothesis, maybe more than one, rather than making one complex hypothesis. You could also have empirical hypothesis, wherein a lot of your answers are being derived from the empirical evidences, the factual information which is available to you. It's also often called as working hypothesis, which is also because there are certain theoretical assumptions already existing, and we can draw from there that what we are posing today as the hypothesis is being drawn from there. Say, for example, we have a lot of theoretical assumptions which tell us about fertility and income associations, right? An inverse association between fertility levels and income levels, right? So this is already existing based on empirical data, evidences, based on literature. You may want to evolve a hypothesis, probably trying to explore what's happening at the income levels which are at extreme ends of the spectrum, very high income levels and very low income levels. What's happening there in terms of fertility, right? So that's something which again you might want to consider as when you're labeling what kind of hypothesis you're formulating when you're trying to get there. Statistical hypothesis can also be drawn upon, wherein like I said, it will be more in terms of logic based, where you might want to draw in some kind of specific population and draw some kind of information, evidences about that specific kind of population, and then try to investigate. So, for example, we might say that 44% of India's population is in age group which is usually suggested as young population, 20 to 25, for example, right? So this is more like using the empirical evidence already existing to formulate your hypothesis. So these are something which we might want to take on board when we are
formulating the hypothesis. So we do see that there could be some hypotheses which are very simple, which probably need the others could need some more explanation when you're getting into complex hypothesis. Some could be also correlational in nature, where you are looking at one set of populations over the other set of populations. So we do see theories becoming a very important source of hypothesis, because you're reading the existing literature and deriving your information, collating your information, organizing your information, and then zeroing in into formulating your hypothesis. There could be observations which come from existing data, which is printed, which is visible around you. COVID perhaps has given us, a very, very evident information while observing what's happening around us, in terms of raising certain questions and trying to answer them. Then there could also be, some kind of, existing research which could be done in another discipline, which you might want to execute in your discipline, for that matter. The magnetic field theory, for example, has been taken on board in demography, wherein you have demographic field theory in terms of what are the how do populations move, how do populations concentrate over space in certain ways. So meaning to say that we do tend to overlap, and this is also part of transdisciplinary research in some sense, wherein we might want to build in the interdisciplinarity in the questions which we might be raising. So from here, perhaps it becomes important to get to the central issue of hypothesis, wherein we need to make sure that there is some kind of reliability and validity which is existing in the hypothesis of the research that we are putting together. So when we're talking about reliability, what exactly is that we are talking about? Reliability is when there is a repetitive evidence, the result is repetitively same. Okay, so for example, if you are using a bathroom scale which has no problems, it is absolutely right, and you are trying to weigh something, right? So the machine on which you're weighing has to be correct without any fault, and what the object which you're weighing should not be changing in any way, right? So each time you weigh, the weight should be same, right? Say for example, if I weigh myself on my bathroom scale, if I have not put on weight, and if the machine is functional correctly, my weight repeatedly will be same, right? But if there is some problem in the weight, I have put on some weight, or the machine is failing me, then there is the problem which will inflict on the reliability of the machine, right? So the dependability that I have on this machine, our research tools, have to be necessarily suggest the fact that we are intending to measure. So the tools that we make have to be correct in terms of what we want to measure. If I want to measure what are the health services being provided, the questions, the tools should be pertaining to that more than anything else. So the point therefore I'm making is reliability largely poses on that context. So many a times what might happen that if you're weighing the same object, let's say if you're weighing a box which we know is a 5 kg box, right? But when we are weighing it, the weight is coming to, let's say, 4.5 kgs and not 5 kgs. So you know what you are weighing is right. What you are weighing, you know what you're weighing, right? So what you are measuring in your research, the question that you're posing is right. But
the way it is, the tool through which it is being measured seemingly is also right, but the contents, because you know what the content should be, is not what is actually being measured, right? So I hope I'm not confusing you. You know that the box is of 5 kgs, but the result is coming as 4.5 kgs, which means that you know what you want to measure, but what is being measured in terms of by way of the use of the tool, which is the machine where there is a fault, that the outcome is becoming different. So there is some kind of the validity is there, because each time your weight maybe will be 4.5, because that's what the content is actually weighing. So it is the reliability is there. The content is weighing 4.5 grams, but it is not valid because it should actually be weighing 5 kg. So it should actually be measuring what you intended to measure, but it's not measuring, the tool is not measuring what you intended to measure. So this is something which we need to probably take care of, why, how we differentiate between, or how we understand how the reliability becomes important in terms of constructing the tools, and also before we come to the tools, posing the questions that we may want to be posing it. Just to kind of give us a clarity on validity also, one more time. Sometimes suppose we want to examine the reflections in terms of healthcare utilization. I'm taking more of these examples because this is what perhaps is my area of work. तो अगर हम healthcare utilization की बात करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो जो हमारे indicators होने चाहिए वो maybe how many times doctors visited, health center is visited, hospital is visited, what are the medicines which are being taken, कुछ pathological test करवाया है, क्या outcome आया है. तो ये सारी चीजें शायद हमें care utilization की तरफ ले जाती हैं. जबकि अगर हम सर्विसेज पर से की बात करना चाहें या उससे जुड़े हुए सवालों को समझना चाहें, तो शायद हम ये मेजर करेंगे, ये टूल्स में रखेंगे कि how many people are there who are as part of the health center or hospital, what are the services which are being provided, what are the timings of the services, what is the duration of the services, कितना वक्त दिया डॉक्टर साहब ने आपसे बात करने के लिए. तो जो सवाल है उससे जुड़े हुए हमें इंडिकेटर्स यूज करने होते हैं, तभी हमारा जो टूल है वो वैलिड होगा, तभी हमको वो 5 kg का जवाब 5 kg में आएगा, 4.5 kg में नहीं आएगा. तो इसलिए मेरे ख्याल से जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, रिलायबिलिटी है तो जरूरी नहीं है कि वैलिडिटी भी होगी. रिलायबिलिटी तो रेपिटेटिव होने के कारण आ ही जाएगी, लेकिन रेपिटेटिव होने के साथ साथ वही चीज हमें बताए जो जिसको लेकर हम सवाल उठा रहे थे या हम जो समझना चाह रहे थे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. और यहाँ पे शायद एक चीज़ और ज़रूरी हो जाती है समझना, जो हम आम तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं. रिलायबिलिटी जो है, जो रेपिटेटिव कंसिस्टेंट रिजल्ट जो है, वो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स में बहुत इफेक्टिवली दिखाई दे जाता है, क्योंकि यू वेरी ऑफन यूज योर स्टैटिस्टिकल टूल्स टू बी एबल टू ब्रिंग दैट इन. तो और वो रेपिटेटिव जो कंसिस्टेंट रिजल्ट है उसको यूज करके हम शायद उसका रिजल्ट्स को यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब हम क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो रिलायबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो बात कही जा रही है वो कितनी वैलिड है. तो एक्यूरेसी जो है वो कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू the repetitiveness of the information. Also because a lot of qualitative data is used for the studies. Qualitative studies are
using lesser quantum of empirical evidences as compared to the quantitative methods. और वो शायद इसलिए भी होता है कि qualitative methods usually allow us to look into the processes of the situations which quantitative research is already informing us about. तो वो शायद बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें समझने के लिए. तो when we are actually trying to make some comparison between reliability and validity, एक दूसरा example शायद I feel is more simpler to kind of bring in. अगर हम मेरे ख्याल हम में से काफ़ी सारे लोगों ने as kids ये try ज़रूर किया होगा. ये जो डार्ट होता है एरो, स्पेशली स्कूल फेयर्स में होता था, वो एक डार्ट है और आप उसको एक जो भी बुल्स आई है उसमें आपको डालना होता है, उसमें फेंक कर मारना होता है वो एरो. तो और कई सारे सर्कल्स बने होते हैं. आई एम श्योर ओलंपिक्स करते वक्त देखते वक्त भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा. तो जब ये जो डार्ट है, जब ये एरो जाके सीधा एकदम बीच के पॉइंट पे जाके गिरती है, तो उस पॉइंट को हम ये मान के चलते हैं कि चूंकि ये डार्ट थी और इसको बुल्स आई ही हिट करना था, ठीक है. तो अगर वो डार्ट 2, 3, 4, 5, 10 बार में वो बुल्स आई हिट कर रही है, तो रेपिटेटिवली वो बुल्स आई हिट कर रही है और उसे बुल्स आई ही हिट करना था और उसने वही किया. तो जब हम 2-4 सवालों को लेकर कुछ मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर आंसर रेपिटेटिवली वही आ रहे हैं और जिस बात को लेकर हम समझना चाहते हैं कि इस हेल्थ सेंटर में किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, तो अगर उसी के इर्द गिर्द सारे सवाल आ रहे हैं, तो ये मान के चले कि जो क्वेश्चंस आप पोज कर रहे हैं वो दुरुस्त क्वेश्चंस हैं. दूसरी तरफ बहुत बार ऐसा होता है कि each time we are hitting the arrow, वो एक ही तरफ जाके, लेट्स से कि एक आगे नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में ही जाके हिट कर रही हो, बोर्ड के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में ही हिट करे, सारी की सारी एरोज वहाँ हिट करे. तो रिलायबिलिटी तो है, इट्स हिटिंग दैट सेम पॉइंट each time, but it's not hitting what it should be hitting. तो similarly हो सकता है रेपिटेटिव क्वेश्चंस के तहत हमें रेपिटेटिव जवाब तो मिले कि हाँ भाई डॉक्टर साहब वक्त से नहीं आए या डॉक्टर साहब ने हमें टाइम नहीं दिया, लेकिन हम बात ये शायद कुछ और कर रहे थे कि क्या आपने केयर यूटिलाइज किया कि नहीं, उसके तहत आपने जब डॉक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने क्या दिया वो भी बताना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. आई नो बिहेवियरल साइंसेज में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड आंसर्स आपको मिलेंगे, स्पेशली क्वालिटेटिव उसमें. बट टू पुट इट स्टार्कली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब डार्ट एक ही हिस्से में बार बार लग रही है, बट फॉर द सेंटर द रिलायबिलिटी इज देयर बट वैलिडिटी इज देयर. तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आई मीन इट्स गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, पर बीच में हिट ही नहीं करा एक भी बार. 10 बार अगर आपने हिट किया तो सारे बोर्ड भर में लगी, लेकिन बीच में तो लगेगी नहीं. तो वेरी पुअर रिलायबिलिटी एंड वेरी पुअर वैलिडिटी. और वो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल आपने पोज किए थे अपने रिसर्च के तहत, ना तो वो आपको मीनिंगफुल आंसर्स इवोक करवा पा रहे थे आपके रिस्पोंडेंट से, ना ही वो 2, 3, 4 लोग उस सवाल का सिमिलर काइंड ऑफ जवाब दे रहे थे. तो वो it kind of demeans your it wants you to relook into the questions that you could have posed. ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो अर्ल बाबी की किताब है ऑन रिसर्च मेथड्स, आप उसमें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे. तो I think I'm going to stop here by just suggesting that any time that we are putting in together our research, we are making observations from existing realities, literature, applying them to kind of understand what is it that we want to study through, using certain tools and techniques in our research, which perhaps will speak to the existing theories. There is a possibility that it will lead us towards newer theories, and in this whole process, hypothesis becomes the crucial element in ensuring that we use the right kind of pose the right kind of question, use the right kind of
tools to be able to exert them, and then also take them forward in terms of probably giving directions to the new research. I'm going to stop here. Thank you so much, the organizers, Department of Sociology, and Adnan, and of course Dr. Ziauddin. Thank you. आपके जो भी सवालात हैं वो आप यहाँ पोडियम पर आकर मैडम से पूछ सकते हैं। थैंक यू। सवाल नहीं होने की दो ही सूरतें होती है, या तो मैंने जो भी कहा बिल्कुल बकवास था, या जो कहा वो बहुत अच्छा था। आपके जो भी सवाल हों आप पूछ सकते हैं, आप आ जाइए। We have questions coming up. एक सवाल ये है मैम कि रिलायबिलिटी की बात जब आप कर रही थी, फॉर एग्जांपल टूल्स या मशीन्स की बात कर रहे हैं, मशीन इज रिलायबल, टूल बहुत रिलायबल है, बट द पर्सन हु इज हैंडलिंग द टूल may be subjectively biased or influenced by the field itself. उस कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल ओपिनियन सर्वे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स करते हैं, और वो 10 लोगों की ओपिनियन लेने के बाद उनको लगता है पूरा लोकेलिटी की ओपिनियन यही है, and they rely more on less number, but then rely so much about on the number of responses that everyone feels that this is the most reliable data. So how do we see that differences in social science research? Disconnected. You can take up 2 big questions. Good afternoon, ma'am. This is Iftikhar. Good afternoon, ma'am. Okay. You got disconnected. Yeah. Good afternoon, ma'am. Sorry, there was bad connectivity. Sorry. Actually, I have 2 questions. Many research theses in social science, I see, do not include hypothesis. Can it avoid in the qualitative, unlike the quantitative research, where we bring data from the test hypothesis tentatively? And another one is, what are the main factor play an important role interviewer during interview research field can analyze an interpretation through the literature or personal observation like is field also. Thank you. Thank you so much for posing this question. I'm going to begin with your second question. I think it's an interesting point that you're raising. How do we, formulate and answer questions by observations or literature? Like I said, when we are addressing research, when we are engaging with research, एक अप्रोच हो सकती है जो स्टार्टली क्वांटिटेटिव होगी, दूसरी हो सकती है जो क्वालिटेटिव होगी.
बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों अप्रोचेस को मिक्स करके मिक्स मेथड्स अप्रोच को इस्तेमाल करें। और मैं आपको रीज़न बताती हूँ, स्पेशली व्हेन यू से कैन लिटरेचर बी अ सोर्स ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस। बहुत बार ज़रूरी हो जाता है कि जो लिटरेचर आपने पढ़ा है उसे कहीं और से भी आप सब्सटैंशिएट करें। जो ट्रायंगुलेशन के तौर पे भी बहुत बार हम यूज़ करते हैं कि जो चीज़ें आपको लिटरेचर में मिली, क्या वो ऑब्जर्वेशंस जो आपका फील्ड है उसके ऑब्जर्वेशंस के तहत आपको उसमें से कुछ सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं क्या? कोविड को ही आप ले लीजिए, मसलन माइग्रेंट वर्कर्स को के बारे में अखबारों ने तमाम बातें की, लेकिन गवर्नमेंट डेटा सेज दैट देयर वर नो माइग्रेंट्स एट ऑल, राइट, एज ऑफ नाउ। रिसेंट डेटा मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं मालूम अभी क्या अपडेट किया होगा, बट लास्ट दैट आई रेड कपल ऑफ perhaps months back, it said कि हमारे पास कोई migrant का डेटा ही नहीं है. That's an official figure in the quoted in the assembly, right? तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि both literature and observations need to be put together to substantiate your research. चाहे वो question formulate करने के वक्त हो या फिर जब आप उसका hypothesis generate करें. That's something which allows us to be able to work through the design and wherein we will have the kind of tools and techniques that we could be using. That's where perhaps the quantitative versus qualitative becomes very important. And that brings me to the question that you're saying, hypothesis hona chahiye ki nahi hona chahiye. बहुत बार हम जब क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं या क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक्सप्लोरेटरी है, वी रियली डू नॉट नो व्हाट फील्ड विल थ्रो फॉर अस, राइट? तो फील्ड से हमें पता चलेगा कि मसला क्या है, हमको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम फील्ड में जा रहे हैं, पहला सवाल कि हम फील्ड में क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। And when you start answering this question, these questions will actually tell you that there's already something in the back of your mind because of which you're going to the field. ठीक है, नहीं तो हम फील्ड में क्यों जा रहे हैं, हम क्यों रिसर्च करने जा रहे हैं फील्ड में, कहीं ना कहीं वो सवाल आपके दिमाग में होता है। मे बी इट्स इन अ वेरी ब्रॉड वेरी प्रिलिमिनरी फॉर्म, इट इज ऑलरेडी देयर। तो बहुत बार जब हम उस सवाल से को लेकर फील्ड में जाते हैं, तो जो फील्ड में हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, फील्ड से जो हमें डेटा, एम्पेरिकल डेटा इन टर्म्स ऑफ टेक्सचुअल, इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, डेटा कैन बी टेक्सचुअल आल्सो, आई एम श्योर यू नो दैट। तो वो दोनों ही चीज़ें जब मिलती हैं, तो हम आगे के सवालों को और आई मीन यू कैन रेज फर्दर क्वेश्चंस। लेकिन जब हम फर्दर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो ये मान के चलना कि वो एकदम क्लीन स्लेट है, ये बहुत वाजिब नहीं होता है। मेरी जो सोशल साइंस रिसर्च की बात समझ पड़ती है, बिकॉज देयर समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी डोंट रिसर्च इन अ वैक्यूम, है ना कहीं हमसे पहले कोई रिसर्च कर चुका है। और इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ये मान के चल रहे हैं कि फील्ड इज गोइंग टू थ्रो अप nuances, field is going to throw up newer things for sure, but nothing which is not existing before it. It can add to the existing knowledge. तो बहुत बार आप hypothesis लेके ना भी चले consciously, there is a possibility that the questions that you've raised for yourself will have some kind of answers which may be proven correct, or which you may accept or you may reject. तो कॉन्शियसली आप लेके इसलिए नहीं चलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, particularly because you are allowing the field to play up. You're not constricting your ideas to be rolling around the answer that you have posed in the form of the hypothesis. हम ये मान के चलते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर, राइट? तो अगर वो आंसर हमने रख लिया है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली विल ट्राई टू रिवॉल्व अराउंड दैट। क्वालिटेटिव रिसर्च आपको ये सजेस्ट करता है कि even if it exists, it will exist. Please don't tie yourself around that. Try to explore beyond. तो ये मुद्दा है जब हम हाइपोथेसिस लेके चले या नहीं चले का सवाल होता है। You may as a researcher
particularly अगर आप quantitative reflections use कर रहे हो तो there is a possibility very starkly you might want to say कि ये मेरा hypothesis है. बहुत बार होता है कि आप नहीं भी लेके चले, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक जवाब आपके जहन में होता ही होता है. Okay, I hope it's answering your question. Adnan. Yeah, ma'am, we have one more question. थैंक यू मैम. मैम आपने बताया कि क्वेश्चन नहीं होने की एक वजह होती है कि टॉक बहुत अच्छा है. टॉक बहुत अच्छा होने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस हैं. सो मैम 2 क्वेश्चन थे. एक तो बहुत बुनियादी है, वो ये कि हाइपोथेसिस जब हम फॉर्म करते हैं, क्या वो एक वैक्यूम यानी एक क्या रूम में हम फॉर्म करते हैं, यानी एक जो रिसर्चर है उसको हाइपोथेसिस फॉर्म करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, नंबर 1. दूसरा सवाल ये है कि आपने कुछ हेल्थ से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हैं, तो एक ले अंडरस्टैंडिंग है और दूसरा कुछ एक्सपर्ट्स का अंडरस्टैंडिंग है. तो हम जो हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं उसमें दोनों में से कोई एक का डोमिनेंस होता है. तो क्या ले अंडरस्टैंडिंग का अगर डोमिनेंस है या एक्सपर्ट्स अंडरस्टैंडिंग का डोमिनेंस है, तो क्या वो हाइपोथेसिस को लेस वैल्यूएबल या मोर वैल्यूएबल बनाती है? थैंक यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रिसर्च, चाहे वो यंग रिसर्चर करे चाहे वो एक्सपर्ट करे, रिसर्च ही होता है. और ये अलग बात है कि हम लोग इतने हायरार्किकल हैं दिल और दिमाग से कि हर चीज़ में हम बेहतर और कमतर ढूंढ लेते हैं. रिसर्च इज़ अ रिसर्च. अलग बात है कि जिनके पास 20, 25, 30, 50 साल का एक्सपीरियंस है, इट्स ऑब्वियस दैट उनको बेहतर रिसर्च करना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है. ऑब्वियस और ज़रूरी में फ़र्क है. जो आपने हाइपोथेसिस को कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं उसकी बात करी. अगर हम टेक्स्ट बुक नॉलेज की बात करें तो 3-4 सोर्सेज को बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट किया जाता है कि दीज आर द सोर्सेज जो आपको हाइपोथेसिस जनरेट करने में मदद करती हैं. थियरीज जो एग्जिस्टिंग थियरीज है फॉर एग्जांपल. और मैं आपको एक बहुत बेसिक सा जवाब पॉइंट बताती हूँ. आज की तारीख में हमको मालूम है कि जो अर्थ है वो स्फीयर के शेप में है ना. लेकिन जब गैलीलियो ने कहा कि और उससे पहले ये था कि अर्थ इज फ्लैट, और उसके सवाल को रिविजिट करने के लिए उस समझ को रिविजिट करने के लिए गैलीलियो ने कहा था कि फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है. उसमें ये हो रहा था उस वक्त, एंड आई एम श्योर यू नो द स्टोरी ऑफ गैलीलियो. उसको काफी कुछ झेलना पड़ा क्योंकि उस वक्त की समझ को उन्होंने चैलेंज किया था कि Earth is not a flat, it doesn't have a flat surface. वहाँ पर जो existing theoretical assumption था कि Earth is flat, stayed for a very long time. उसको बहुत बार उसको मान लिया गया था, और उसको सवाल करने के लिए ये जो नई सोच बनाई गई थी, जो गैलीलियो, कोपर्निकस, कई सारे लोगों ने मिलके किया कि अगर अर्थ फ्लैट होती तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आई एम श्योर वी ऑल लर्न दिस इन स्कूल. शिप जब ओशन में होती है और आप उसको देखते हैं तो अगर फ्लैट होता तो पूरा का पूरा शिप एक साथ दिखता. फ्लैट नहीं है इसलिए आप पहले उसका मास देखते हैं, फिर उसका पोल, फिर पूरा का पूरा शिप दिखता है. तो उस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने जो सोच बनाई, जो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस किए, जिसकी बेसिस पे उस थियरी को चैलेंज किया गया. तो जो एग्जिस्टिंग थियरीज हैं, दोज वर द थियरीज व्हिच गिव राइज टू दिस न्यू क्वेश्चन. कोविड को लेकर भी या एजुकेशन को लेकर भी हम बहुत ही सीधे तरीके से ये मानकर चलते हैं कि इनकम एंड एजुकेशन सीमिंगली हैव अ वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप. इनकम अच्छी है तो हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन अटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट
you can revisit it, question it, and explore it in a situation where perhaps you might come up with an entirely inverse kind of a relationship, especially if you look at extreme ends of the spectrum. नॉर्मल कर्व के आप एंड्स में देखेंगे तो बहुत सारे जो let's say business houses हैं, you may not find higher levels of education at all, but income levels are higher. तो कहने का मतलब ये कि existing theories do allow you to question what's been existing and can that be revisited. दूसरा जो हम observations की बात करते हैं, और observations can be in the printed form. तमाम सारे डेटा सोर्सेस हैं हमारे पास, सेंसस से लेकर आजकल NFHS की बहुत बात की जाती है, या इकोनॉमिक सर्वे है, या CMI है. तो ये सारे जो डेटा हमारे सामने है वो हमें हमारी समझ बनाते हैं और हमें सवाल करने के लिए मजबूर करते हैं. क्राउड सोर्स डेटा कोविड के दौरान बहुत सारा हुआ. ऑफिशियल डेटा हमारे पास कुछ नहीं है माइग्रेंट्स के लिए, लेकिन क्राउड सोर्स डेटा से हमें पता चलता है कि देयर हैव बीन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, there was something to the tune of about 7 to 10 lakhs of migrants जो सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में stranded हुए हैं. तो observations do help us in posing those questions. दूसरा थर्ड एलिमेंट शायद ये हो जाता है कि जब हम किसी भी डोमेन में हमने अगर कुछ पढ़ा है, और शायद मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था डेमोग्राफिक फील्ड थियरी, कि हम कहीं और किसी और डिसिप्लिन में, किसी और एरिया में कुछ हम शायद समझ बन सकती है, कुछ हम पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, तो उसे लेकर हम हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ जो लैब बेस्ड रिसर्च होता है काफ़ी हद तक के वो चूहों पे किया जाता है, खरगोशों पे किया जाता है, उसके बाद हम वो ट्रांसलेट करते हैं फॉर ह्यूमन पर्पसेस. तो एक स्पीशी पे रिसर्च करने के बाद वो ट्रांसलेट किया जाता है फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन कंजम्पशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. वो एक तरीका हो सकता है. या मान लीजिए आपने कोई एक रिसर्च पढ़ा, मेरा कोई रिसर्च पढ़ा जो आपको बेहतर अच्छा लगा, आपने उसको रिविजिट करने की कोशिश की किसी और पॉपुलेशन ग्रुप में, किसी और रीजन में. आपका रिसर्च मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि ठीक है इस एरिया में तो आपने ये आपकी फाइंडिंग्स आई हैं, कैन दिस बी रेप्लिकेटेड समवेयर एल्स, कैन वी सी द सेम, कैन वी एम्प्लॉय द सेम काइंड ऑफ डिजाइन इन सम अदर पॉपुलेशन. तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेशन, थियोरेटिकल रिफ्लेक्शंस, जो एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है किसी एक डिसिप्लिन में जो हम कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं. आसपास जो हम देखते हैं किसी का रिसर्च, और उसको लेकर हम देख सकते हैं. I mean, we can take it forward from wherever the previous researcher could have left it. तो ये तो रिसर्च के, ये तो हाइपोथेसिस के सोर्सेज हो सकते हैं. दूसरा आप कह रहे थे कि हाइपोथेसिस, सॉरी आई एम जस्ट मिसिंग आउट, आप दोबारा से बताएंगे क्या मुझे, अगर मैंने कवर नहीं किया है आपका वो दूसरा पॉइंट? आई एम सो सॉरी, एकदम दिमाग से निकल गया. आपने क्या पूछा था? 2 चीजें कही थी आपने. सॉरी, आपने 2 चीजें कही थी, दूसरी मैं भूल गई हूँ. और एक चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पाई. मैम ये मैं पूछा था कि आपने शुरू में हेल्थ मेडिसिन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए, स्पेशली कोविड के सिनेरियो में. तो मैं पूछा था कि बीमारी को लेके एक ले अंडरस्टैंडिंग होता है, दूसरा एक्सपर्ट्स का अंडरस्टैंडिंग भी है. दोनों में बहुत मुख्तलिफ, बल्कि कभी कभी ये भी होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी भी है. तो अगर हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं किसी भी एक चीज से मुतासिर होता है, तो क्या वो लेस वैल्यूएबल बनाता है हाइपोथेसिस को, या मोर वैल्यूएबल बनाता है? मैं आपको ठीक से सुन नहीं पाई हूँ, पर जितना मैं समझ पाई और जितना मुझे पहले का ध्यान है, आप ये शायद पोज कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स की सोच होती है और जो लेमन की सोच होती है, उसको इस्तेमाल करके हम हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं. इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग?
और उसमें अगर यही है सवाल, तो मैंने पहले भी आपको कहा कि जब हम ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं, और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलरली अगर हम कोविड कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं, तो कोविड का एक बहुत अहम शायद मसला ये भी रहा है कि हम हमेशा ये कहते रहे कि कोविड हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, वी डू नॉट नो व्हाट हैज बीन व्हाट यू नो केयर प्रोटोकॉल उसका क्या होना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल उसका क्या होना चाहिए, बट ग्रेजुअली वी पुट थिंग्स इन प्लेस। तो उस सारी सोच को जैसे हमने इवॉल्व किया, उस सारी समझ को कि हाउ डू वी एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ कोविड, हाउ डू वी एड्रेस द सिचुएशन ऑफ कोविड, वो सारा कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस हैं और जो लेमन के एक्सपीरियंसेस हैं, इफ आई कैन से दैट, किन्हीं पॉइंट्स पे तो जेल होते हैं और किन्हीं पॉइंट्स पे शायद वो जेल नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर आप यूज ऑफ मास्क की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के मुताबिक हम नंबर्स लास्ट ईयर के नंबर्स और आज के नंबर्स की बात करें तो डिफरेंस है। आज के नंबर्स ऑल्दो कुछ शहरों में बढ़ रहे हैं, इन नंबर्स के तहत क्या मास्क हमें वही प्रोटेक्शन देगा, मास्क जिस तरह की प्रोटेक्शन दे रहा है क्या वो कोविड के लिए ज़रूरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सवाल जो एक्सपीरियंशियल एविडेंसेस के हिसाब से मिल रहे हैं और वो सवाल जो हम एक्सपर्ट्स की समझ के तहत बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं पे वी सी दैट देयर इज अ जेलिंग, कहीं कहीं पे देयर हैज बीन अ डाइवर्जेंस। तो जब हम इन्हें यूज करके रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि हाउ क्लोज कैन वी गेट टू द सोशल रियलिटी। और इसलिए शायद ज़रूरी हो जाता है कि जब हम ऑब्जर्वेशंस, एम्पेरिकल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जो सोर्सेज ऑफ दीज एविडेंसेस हैं, सोर्सेज ऑफ दीज इंफॉर्मेशन है, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस अपना जो hypothesis formulation है उसको करें. These differences will always be there because experts are experts for reasons which we ascribe to them, right? But just because they are expert need not necessarily be the fact, that the whatever is being generated from them is the end product. Experts are also human beings and they can also go wrong. And we have a good set of examples wherein layman understanding has made more sense than the experts' understanding, not demeaning the experts in any way. I hope I've made some reflections on this. Ma'am, we have another question. I think this would be our last question for today's session. And this is from Shiv Kumar, who has joined our live session. And his question is, tool is reliable, but person who is handling it is not reliable. And it may result in the measurement error as well. So would it affect reliability, validity, and also other criterias of measurement? In fact, the question itself gives the answer. When you are handling, there are two things, right? The kind of questions which are being posed and the way these questions are being posed, right? So if you recall the simple example that I was trying to give in terms of the darts, right? While you know that this is to be posed, but the way it is being posed is not getting you the answer which it should direct itself to, right? तो अगर हम कोविड के बारे में, कोविड से जुड़े हुए हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करना चाह रहे हैं, तो वो सवाल हमारे उस तरह से होने चाहिए और उन्हें उस तरह से हैंडल करना चाहिए. इफ आई एम द रिसर्चर, आई मस्ट पोज दोज क्वेश्चंस in accordance to the way that it will reveal the answers towards the question which are pertaining to health services, not pertaining to, let's say, migrant worker, for example. तो दो चीजें हो जाती हैं कि एक तो जिस चीज को लेकर आप सवाल करना चाह रहे हैं वो ही किया जाना चाहिए और जिस तरह से आप कर रहे हैं वो किया जाना चाहिए.
तो और उसमें शायद हम कहीं ना कहीं रैपो बिल्डिंग, जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप सवाल पूछ रहे हैं, वो सारा मैटर करता है. स्पेशली अगर सेंसिटिव क्वेश्चन, कोविड हैज बीन अ सेंसिटिव, a death has occurred, all the more sensitive. तो शिव, थैंक यू फॉर पोजिंग दैट क्वेश्चन. इस सूरत में अगर जो सवाल कर रहा है वो ठीक से नहीं कर रहा है और जवाब भी नहीं मिल रहा है, तो ना तो वो रिलायबल होगा और ना ही वो वैलिड होगा. रिलायबल तब हो एटलीस्ट वो सवाल किए जाते और उनके जवाब लगभग सिमिलर मिलते, तो रिलायबल होता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी ऑफ आंसर्स इज देयर. But not reliable, not valid, because it's not giving you the kind of answer you're expecting to get for this question. I hope I made the point clear. Yes, Shiv, ma'am. थैंक यू मैम. इसी के साथ हम आज के अपने इस सेशन के अख्ताम पर पहुंचते हैं, और मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे पीएचडी स्कॉलर मुर्तज़ा अली नासरी को इनवाइट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, as Anand said, already he said my name. So, I, Murtaza, on behalf of the Department of Sociology, extend a hearty vote of thanks to Professor Sangamitra, ma'am, who spread time from her busy schedule to grace today's session. Ma'am, we had an opportunity to hear about your thoughts in form of words, and this will surely be useful as well as helpful to the students, especially the PhD scholars who are also part of this workshop. And also, we have been fortunate enough to have you as one of the speakers in this program of 5 days workshop, and I especially thank you, Sir Ziauddin, for giving us that opportunity to hear from the speakers like you, ma'am. And I also extend my thanks to all the staff members of IMC for their enormous cooperation. Last but not the least, a big thank you to each one of you, the students or the other participants who are from outside MANUU, the internal students of MANUU, who helped in making today's session a successful one. Thank you so much. Sorry, Adnan, I just wanted to make a correction. If I heard you correctly, you said I'm currently at Ball State University, which I am not. So in case I've missed, I just wanted to make that correct. No, that's absolutely fine. It must be an old reflection. So I'm currently at JNU only. I was there about a decade ago. So thank you so much. Thank you. I can leave the studio. Yes, ma'am, you can leave.